Okay. What is the first formula in the radioactivity we need to remember better? Sure. See better. In the radioactivity, Rutherford's Soddy's law. I hope you remember this formula. Rate of disintegration dN divided by your dt is directly proportional to the number of active nuclei present. Proportionality constant निकाल रहे हैं तो minus lambda into n. dN by dt is equals to minus lambda into n. N is right now for me what? Active sample. Or we can say this is your activity of your sample. dN by dt. What is lambda beta? Lambda is known as for me decay constant. Lambda is for me what? Decay constant. Then, or we can also call this one as disintegration constant. Disintegration constant. Disintegration constant. So dN by your dt. dN by your dt is equals to minus of your lambda into your n. Then, is the first formula आपने क्या याद रखना है बेटा? Second formula, amount of remaining यानी कितना अमाउंट रिमेन कर रहा है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन. अमाउंट ऑफ रिमेनिंग बोलो आर, हम लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी is given by फॉर्मूला याद है आप लोग को? n is equals to n naught exponential to the power of minus lambda into t. N is equals to your n naught exponential to the power of minus lambda into t. T is the time of your disintegration. N naught is actual number of sample present in the sample. N is the amount of the nuclei present after the disintegration. कितना टाइम? इसके लिए टाइम निकालने के लिए अगर फॉर्मूला पूछा तो t वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.303 divided by your decay constant lambda, and this one is log to the base 10 n naught divided by n. Formula याद रख लीजिए बेटा. So time will be equal to t is equals to 2.303 divided by lambda log to the base 10 n naught divided by n. ठीक है? Sure. Next formula, mean life. This one is your mean life. इसको हम लोग एवरेज लाइफ भी बोलते हैं बेटा. This is also your average life, and it is given by average life is given by tau is equals to your 1 by lambda. Tau is equals to your 1 by lambda. Reciprocal of decay constant is also called as of your average life. Units of radioactivity. Units of radioactivity. First one, 1 curie is represented by 1 Ci. That will be equal to 3.7 into 10 to the power of 10 disintegration per second dps. उसी तरह से 1 becquerel is represented by 1 b cube, and that value will be equal to your 1 disintegration per second. 1 disintegration per second. That अब प्रॉब्लम्स करने के लिए देखो बेटा, ट्राई टू रिमेंबर डिफॉल्ट याद रखना है बेटा. फॉर हाफ लाइफ पीरियड्स n value will be equal to your n naught into 1 by 2 to the power of n. एक शॉर्टकट. t की वैल्यू क्या होती है बेटा यहाँ पर? t is equals to time taken, that is equals to your half life divided by 2 into your n. ठीक है?
So n is equals to n naught 1 by 2 to the power of n. n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? टाइम t is equals to your t half life into your n. n naught क्या है बेटा? Initial amount of radioactive elements which have been present. N is the remaining amount of your radioactive substance, and n is nothing but of your number of half lives. What is n here? N is your number of half lives. Number of half lives, isn't it? N naught क्या होता है बेटा? N naught is your initial amount before disintegration. Initial amount. और n क्या होता है? Remaining amount after disintegration. Remaining amount after disintegration. I hope इतने basic formulas तो अपने पास आपके पास knowledge होगा basically. N is equals to your n naught 1 by 2 to the power of n. N will be equal to how much better? N is equals to your t by t half. RT is equals to your t half into your n. T half मतलब बेटा half life ये पूरा t by 2 is your half life and total time का half life बोल रहा हूँ basically. Am I clear? Am I clear? So t is equals to how much for me? Or n into your t half. And that is equals to ये total time t है तो t का आधा ऐसा. ठीक है? चलो. See this question. The half-life of Atomium-215 is 100 microseconds. The time taken for the radioactivity of a sample of Atomium-215 to decay to 1/16th of its initial value. 1/16th of its initial value is. See the question right now. The half-life of an atomium दे रखा है बेटा. कितना है? 100 microseconds. The time taken for the radioactive sample of atomium to decay to 1/16th of your initial value. So what is the formula I'll be using here? N is equals to n naught 1 by 2 to the power of your n. n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/16th of initial value. यानी remaining is n की वैल्यू हो गई n naught divided by 16. That is equals to n naught into 1 by 2 to the power of n. A n naught will get cancelled. So this will be equal to how much for me, better? 1/16 is equals to your 1 by 2 to the power of your n. 1/16 can be written as 1 by 2 to the power of your 4. That is equals to 1 by 2 to the power of your n. ये हाफ कट जाएगा तो n की वैल्यू हो गई मेरे पास 4. अगर n की वैल्यू 4 है तो टाइम कितना हो जाएगा? दिस इज योर टी हाफ इनटू योर n से मल्टीप्लाई कर लीजिए. टी हाफ कितना है मेरे पास? टी हाफ इज गिवन फॉर मी हाउ मच? 100 माइक्रोसेकंड्स into n की वैल्यू आ गई 4. So this will be equal to 400 microseconds. Am I clear? Yes, sir. चलो. Next question. Half lives of radioactive elements A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively. Okay. Half-lives of radioactive elements A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively. उसने क्या बोला? Initially, the samples have equal number of nuclei. Equal number of nuclei. After 80 minutes, the ratio of decayed number of A and B nuclei will be.
Options are given for me. 1:16, 4:1, 1:4, 5:4. See the question carefully. Half lives of radioactive elements A and B. मेरे पास दो एलिमेंट्स है A and as well as of E और B, जिसके half lives are given for me T is equals to 20 minutes and 40 minutes. Initially this sample have equal number of nuclei, यानी दोनों के initial number कितना है N0 and N1. After 80 minutes उन दोनों का ratio of undecayed, sorry, the ratio of your decayed number of A and B will be equal to how much? देखो पहले मैं A के लिए बात कर रहा हूँ for A if I am writing N is equals to your N0 1/2 to the power of your half life कितना हो जाएगा बेटा? What will be the value of an half life? Half life of the two elements A and B are given how much for me? 20 minutes, isn't it? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N is equals to T by your T half बोला था मैंने, isn't it? कितना आएगा? 4 sir. 4 कैसा? 80/20. 20 by 80/20. आफ्टर 80 मिनट्स बोल रहा है ना, तो टाइम इज योर 80 डिवाइडेड बाय टी हाफ, इसका कितना है 20. A0 0, 2 1 जा 2 4 जा, तो इनकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 4. तो ये वाला कितना बन गया? N0 डिवाइडेड बाय 16. सो न्यूक्लियस रिमेनिंग विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? न्यूक्लियस रिमेनिंग विल बी इक्वल टू N0 में से N0 by 16 तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बचा कितना? 1 minus 1 by 16 यानी 15 times of N0 divided by 16, तो ये हो गया रिमाइंडर. डन. चलिए उसी तरह से फॉर बी ले रहा हूं. अमाउंट ऑफ रिमाइंडर इसके लिए कितना हो जाएगा बताइए? N is equals to N0 1/2 to the power of N. N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N is equals to T half is 80 divided by कितना है 40. Is it A0 0, 4 1 जा 4 2 जा, यानी this one is how much for me 2. ये हो गया 2, यानी this will be equal to N0 divided by 4. So I can say here right now nucleus which is been remained, isn't it? That will be equal to N0 में से initial में से N0 by 4 को निकाल दीजिए. That will be equal to how much for me 3 N0 divided by 4. अब इन दोनों का रेशियो चाहिए. So ratio will be equal to how much for me? रेशियो ऑफ किसका किसका पूछ रहा है? रेशियो ऑफ A by B, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई 15 N0 डिवाइडेड बाय 16 इनटू इसका उल्टा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 इनटू N0. N0 गेट कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा 16, isn't it? तो सिंपलीफाई कर लो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 is to 4 आ गया? Yes sir. देख लीजिए फिर से एक बार. Half-life of the radioactive elements A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively. Initially, the sample have equal number of nucleus. After 80 minutes, the ratio of your decayed number पूछ रहा है यहाँ पर, ये important है, इसीलिए मैं remaining निकाल रहा हूँ. कितना decayed हो? N मतलब क्या है बेटा? N0 is your actual number present. N0 is actual number present. N is right now for me what? What is the value of your N? N किसको बोलते हैं बेटा? कितना डिके हुआ? कितना डिके हुआ? N0 by 16. तो रिमेनिंग कितना हो गया? अगर आपके पास 100 रुपए है, आपने 50-40 रुपए खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 40 माइनस 100 माइनस 40 करोगे ना, दैट विल बी इक्वल टू 60. वही कर रहा हूँ. मेरे पास इनिशियली N0 थे, कितना खर्च हो गया मेरे पास? N0 by 16 खर्च हो गए. तो डिकेड कितना हो गया राइट नाउ? The ratio of the decayed number of your A to that of your B will be equal to how much? The number of the nuclei which will be remaining will be equal to how much? Remainder will be equal to your 15 N0 divided by 16. Clear? Yes sir. चलो यही फॉर्मूले पे मैक्सिमम बनते हैं बेटा, उससे ज्यादा अगर चले जाए तो अलग बात है, बट 90% दिस आर द फॉर्मूला ऑन व्हिच द प्रॉब्लम्स आर बीन फ्रेम्ड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा. पर ये रेडियोएक्टिव मटेरियल, पर ये रेडियोएक्टिव मटेरियल half life is 10 minutes. Half life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, 600 number of nuclei,
the time taken in minutes, the time taken in minutes per disintegration of 450 nuclei. 450 nuclei is dash. Options given are 20, 10, 30 and 50. So let us see the question first. क्या बोल रहे हैं आप? For a radioactive material, half-life is given for me 10 minutes. Okay, I'll repeat you better, no problem. For a radioactive material, एक problem देख लो पहले. For a radioactive material, half-life, मान के चलो एक radioactive element है, इसका half-life दे रखा है मेरे पास. T half-life is equals to कितना है? 10 minutes है. If initially there are 600, यानी N0 की value इसके पास कितनी है? 600 है. The time taken in minutes for disintegration से कितने टाइम में कितना disintegrate हो रहा है? यानी number of nuclei remaining कैसे निकालोगे बेटा? पहले बताओ. Number of nuclei which are remaining. Nuclei which are remaining. Initially कितना था मेरे पास? 600. Isn't it? कितना disintegrate हो रहा है बेटा? 450 disintegrate हो रहा है. तो remaining कितना है मेरे पास? 150. यानी n is equals to n naught 1 by 2 to the power of your n. n की वैल्यू कितनी है? Number of nuclei remaining is 150. That is equals to your initially 600 into 1 by 2 to the power of your n. Isn't it? तो कितना हो जाएगा बेटा? This is 150 divided by 600 is equals to 1 by 2 to the power of your n. ये 2 is 0, ये 0 चले गया. 15 by 60. कितना आ रहा? 3 by 12. कितना? 1 by 4. 1 by 4. Can I write this 1 by 4 as 1 by 2 to the power of 2? Yes, sir. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 2 के बराबर हो गई. n की वैल्यू 2 के बराबर हो गई तो टाइम निकालने का फॉर्मूला t is equals to t half into your n. t half कितना है मेरे पास? हाफ लाइफ कितना 20. है? 10 minutes into n कितना आया? 2. So 10 into 2 that will be equal to 20 minutes. मैं क्लियर? Yes, sir. Check. Next question. The half-life of a radioactive substance is 30 minutes. Okay. The time in minutes. The time in minutes taken between 40% decay, 40% decay and 85% decay, 85% decay of same radioactive substance, of same radioactive substance is. Options are 15, 30, 45, 60. The half-life of a radioactive substance is 30 minutes. यानी मेरे पास एक radioactive substance है, इसका half-life, T half-life is given for me as 30 minutes. ठीक है? The time in minutes taken between 40% decay and 85% decay, यानी 40% और 85% के decay के बीच में of radioactive कितना टाइम मुझे लगा? Because since 40% of amount is decay, तो remaining कितना रहेगा बेटा? ये बताओ. अगर 40% डिके हो गया तो बचेगा कितना? 60% ना. तो फर्स्ट स्टेप में since 40% is decayed, 40% is decayed, so remaining कितना होगा बेटा? 60. So remaining is 60%. यानी टोटल रिमेनिंग कितना है मेरे पास? 60%. यानी n1 is equals to n0. n0 की वैल्यू कितनी है? 60%. यानी 60 divided by 100. तो कितना बन जाएगा? 0.6 times of your n0. है कि नहीं? उसके बाद कितना डिके हुआ? 85% आफ्टर सर्टेन टाइम.
So after some time the amount remaining कितना हो जाएगा बताइए? The amount remaining कितना होगा? 100 minus 85%, isn't it? यानी that will be equal to how much for me? 15%. यानी 15% के लिए n2 की वैल्यू बताइए. n2 is equals to n0 into 15%, यानी 15 divided by 100, यानी that will be equal to 0.15 times of your n0. बस समझ में आई? पहले मैंने क्या किया, 40% डिके हो गया तो रिमेनिंग कितना हुआ? 60%. तो 60% इज रिमेनिंग, मतलब n1 की वैल्यू कितनी है? 0.6 times of n0. After certain amount, after some time, the amount remaining will be equal to how much बेटा? 100 में से 85% निकाल दो तो बचा कितना मेरे पास? 15%, यानी 15% रिमेनिंग हुआ, मतलब रिमेनिंग कितना हो गया? n2 is equal to n0 15 by 100 यानी 0.15. तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूं, that is n2 divided by n1, that will be equal to your 0.15 divided by this will be equal to 0.6. n0 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. That means 0.15 divided by 0.6 is approximately 1 by 4. 1 by 4 मतलब this is 1 by 2 to the power of your n, isn't it? So number of half lives कितने हो गए बेटा? Number of half lives, number of your half lives, that is n की वैल्यू हो गई 2, N2. isn't it? n की वैल्यू हो गई 2 ना, because this value must be equal to 2, तो ही 1 by 4 हो जाएगा. तो टाइम कितना बनेगा? t is equals to your t half into your n. t half कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 30 into n की वैल्यू कितनी है? 2. so 30 into 2 that will be equal to 60 minutes. एक बार देख लीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन बेटा. The half life of a radioactive substance is 30 minutes. The time taken between 40% decay and 85% decay of the same radioactive substance is how much? देखो पहले मैंने क्या किया, जब 40% डिके हो गया तो मैंने पूछा कि रिमेनिंग कितना हुआ. तो रिमेनिंग कितना है मेरे पास? 60%, यानी n1 की वैल्यू जो हो गई 0.6 टाइम्स ऑफ n0. और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कितना अमाउंट डिके हुआ है? 85%, यानी 100 में से 85% निकाला तो बचा कितना मेरे पास? 15%, यानी n2 की वैल्यू हो गई 0.15 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल वैल्यू, दैट इज n0. इन दोनों का रेशियो लिखा तो मुझे 1/4 आ गया. 1/4 मतलब 1/2 to the power of 2. तो n वैल्यू आ गई मेरे पास 2, तो n वैल्यू मेरे पास आ गई 2. तो टाइम निकालने का फॉर्मूला t is equals to t half into your n, so that is 30 into 2 is equals to 60 minutes. Am I clear with this one? Yes, sir. Clear है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. Okay, the approximate time interval मतलब t2 minus t1 between the time t2 when 2/3 of it has decayed, 2/3 of it has decayed, and time t1 when 1/3 of it has decayed. Question समझो, that is important for you. Understanding the terminology is very important. First one is 14 minutes, second one is 20 minutes, third one is 28 minutes, and fourth one is 7 minutes. The half-life of a radioactive substance is Second options. मेरे पास जिसका हाफ लाइफ कितना है बेटा? 20 minutes. Very good. The approximate time interval t2 minus t1 between the time t2 when 2/3 of it has decayed and time t1 when the 1/3 has been decayed. यानी अगर मैं n1 की वैल्यू निकालूं, n1 is equals to n0 minus, तो कितना डिकेड हो गया बेटा? 1/3, यानी n0/3. तो बचा कितना? 2 times of n0 divided by 3.
तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0 में से कितना डिकेड हो गया मेरे पास 2/3, यानी 2/3 टाइम्स ऑफ n0, so 1 minus 2/3 is nothing but 1/3, ये हो गया n0/3, isn't it? So that means I can write here n2 value will be equal to your n1 into 1/2 to the power of your n. n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n0/3, n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2n0 divided by your 3 into 1/2 to the power of n. So n0/3 gets cancelled, so 1/2 is equals to 1/2 to the power of your n. तो यहाँ पर पावर कितना हो गया 1, तो n की वैल्यू आ गई 1. अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो t2 minus t1 will be equal to how much for me, बेटा, one time period, isn't it? So t2 minus t1 is nothing but equal to 1/2 life of the period, yani that will be equal to how much for me, 20 minutes only. Clear? Am I clear? Yes. Check. Now this is something very important for you. दिमाग लगा के सोचिए, कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. इन ये रेडियो एक्टिव सीरीज, in a radioactive series, number of alpha and beta particles निकालने का तरीका. Number of alpha and beta particles emitted are to be formed. This is my heading. In a radioactive series, number of your alpha and beta particles which are being emitted are to be formed. ठीक है, अब इसका देखिए बेटा, यहाँ पर कंडीशन मान के चलिए, लेट x is equals to number of alpha particles. X is equals to what for me, number of alpha particles, and y is equals to number of beta particles. Y is equals to number of beta particles. Then 4x will be the difference of mass number, ठीक है ना, and 2x minus y will be the difference of atomic numbers. Am I clear? Alpha particle मतलब क्या, 2He4 ना बेटा. Mass will be equal to 4x. 4x is the difference of mass number. 2x minus y is the difference in the atomic number, isn't it? Now what you do is, now solve and find x and y. That will give me the answer. ये basic technique है मेरा. अगर मेरे पास x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है और y नंबर ऑफ योर बीटा पार्टिकल्स है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 4x is the difference of mass number, 2x minus y is the difference in atomic number, then solve for this one and get the value of your x and as well as of your y. Am I clear? देखो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, so you'll get an idea. मान के चलो, if 92 uranium 238, okay, it is decays to Pb 82,206. Now question is, find number of alpha and beta particles. Find the number of alpha and beta particles. 92 uranium is been converting into your Pb82. 92 is converting into your 82. तो पहले क्या करोगे आप, 4x is nothing but equal to what, difference in mass numbers डालो, यानी डिफरेंस इन मास नंबर्स मतलब क्या करोगे, 238 minus 206, तो कितना आ गया ये 32, यानी 4x is equals to 32, तो x की वैल्यू हो गई 8, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 8. कितना आसान है ना. Yes, sir. अगर मुझे बीटा पार्टिकल्स निकालना है तो 2x minus 1 ले लीजिए. 2x minus y is equals to difference in atomic number. Difference in atomic number मतलब 92 minus 82. 92 minus 82 मतलब 10 हो गया, यानी 2x minus y is equals to 10. So 2 into x की वैल्यू हो गई 8 minus y is equals to 10. 2 8 is 16. 16 minus y is equals to 10. So y is equals to कितना, 10. 16 minus 10, तो y हो गया 6. So number of beta particles will be equal to your 6. Am I clear? Sir. Am I clear? Sir. हाँ बोलो.
सर इसमें अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है ना सर, वो मतलब कंसीडर हुआ था सर 8 में ही। हाँ तो वही किया ना मैंने, एटॉमिक नंबर 2He4 मतलब वही किया ना, 2x माइनस वाई। सर इसमें मतलब अगर अपने को एटॉमिक नंबर कितने मतलब एटॉमिक नंबर मालूम करना है खाली अल्फा पार्टिकल के लिए तो। अल्फा पार्टिकल के लिए 2x हो जाएगा ना, क्योंकि 2He4 इज अल्फा पार्टिकल ना, मास इज 4 एंड एटॉमिक नंबर इज 2, यस सर। isn't it? बीटा पार्टिकल के लिए सम है मान के चलिए, तो मैंने क्या किया, 4x मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस इन मास नंबर कर दिया, और मैंने क्या किया, एटॉमिक नंबर यानी हेलियम का 2x है और बीटा का मुझे नहीं मालूम, आई एम टेकिंग इट एज अ फिर y, so 2x minus of y will be equal to difference in atomic number. Done. सर इससे बीटा पार्टिकल्स है सर ये वाई। Y is the beta particles, y यस is सर। the beta particles, x is your alpha particles. मैं भी लिखा ना, देखो यहाँ पर, let x is the number of alpha particles and y is the number of beta particles, तो ऐसा वाला क्वेश्चन में आ गया, तो 4x must be equal to difference of mass number ले लीजिए and 2x minus y is equal to difference in atomic number ले लीजिए and solve for x and y, you will get the answer for alpha and beta immediate. आ गया? सर वो इक्वेशन बना के जरूरत नहीं रहती है सर, ऐसा कर लियो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर टाइम सेव हो जा रहा है इसलिए बोल रहा हूँ बेसिकली। अब ऐसे ओके सर। इक्वेशन आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर 4 टाइम्स वो कर सकते हो बेसिकली, लेकिन अब ये मालूम हो गया तो आपको जल्दी से जल्दी अपने को क्वेश्चन निकल जा रहा है ना बेटा, लिख ले लो, याद रखना क्या है मेरे को, 4x मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस इन मास नंबर, 2x माइनस y मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। मैं क्लियर? यस Yes, सर। sir. अच्छा, नेक्स्ट वन, टू फाइंड द अनडिकेड पार्ट, टू फाइंड अनडिकेड पार्ट यानी कितना पार्ट डिके नहीं हुआ रेडियो एक्टिव में, उसको निकालने का तरीका, छोटा सा शॉर्टकट है इसके लिए भी, देखो बेटा, इन फ्रैक्शन आर परसेंटेज, जो भी है आपका, इन फ्रैक्शन आर परसेंटेज डिवाइडेड बाय अनडिकेड पार्ट, अनडिकेड पार्ट remained in t time, remain in t time will be equal to your x%, x% मतलब x by 100, okay, then in 2t time that will become for me x by 100 का whole square, then in 3t time, 3t time that will become for me x by 100 to the power of 3, ऐसा कर लो, आपको आसानी से प्रॉब्लम निकल जाएगी। टू फाइंड द अनडिकेड पार्ट मुझे करना क्या है, जो भी फ्रैक्शन है या परसेंटेज है वो ले लो, डिवाइडेड बाय अनडिकेड पार्ट रिमेन्ड इन द गिवन टाइम, जितना भी टाइम दे रहा हो वो टाइम मस्ट बी इक्वल टू x% यानी x by 100, मान के चलो 2t टाइम में पूछा तो x डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर ऑफ 2, 3t टाइम में पूछा x by 100 टू द पावर ऑफ 3, ये वाला कर लो, आपको आराम से निकल जाए। जैसे मान के चलो कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई करो विद शॉर्टेस्ट टाइम, if 80% of the 80% of the active nuclei present in the radioactive sample, present in the radioactive sample, present in the radioactive sample are found to remain, or found to remain undecayed, or found to depend undecayed in 1 day, okay, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड the percentage, find the percentage of undecayed nuclei, undecayed nuclei after 2 days। ये जनरली बच्चे लंबा बड़ा प्रोसेस लगाते हैं बेसिकली, अगर ऊपर वाला ट्रिक मालूम हो गया ना तो आप आधे सेकंड से भी 30 सेकंड से कम टाइम में आप इसको करके आ सकते हो। अब फ्रैक्शन कितना दे रखा है बेटा, 80%, isn't it? So 80% मतलब कितना हो जाएगा बेटा, fraction is equals to how much for me, 80%, यानी 80 divided by 100 कर लो, so that will be equal to 0.8, so 0.8 remains undecayed after how many days, after 1 day, One. isn't it? Then
0.8 का whole square. That is how much? 0.64. So this will be undecayed. This will be your undecayed after 2 days. After 2 days. Or I can say that 64% will remain. 64% will remain after 2 days. बात समझ में आए? आप 3 डेज पूछो, 4 डेज पूछो, 5 डेज पूछो तो भी आपको आराम से हो जाएगा. अगर 3 डेज पूछा तो 0.8 to the power of 3, 4 डेज पूछता तो 0.8 to the power of 4. आराम से आपको यूं में निकल जाएगा आंसर. आई एम क्लियर विद दिस वन? परसेंटेज वाला अगर प्रॉब्लम आया सो क्वेश्चन देख लो. इफ 80% of active nuclei present in the radioactive sample is found to be remain undecayed. क्या बोल रहा है? अनडिकेड कितने टाइम में? 1 डे में. तो मैंने क्या किया? फ्रैक्शन कितना है मेरे पास? पहले वो निकाला. 80 divided by 100 that is equals to 0.8 which is remaining undecayed in how many days? 1 day. तो पूछ क्या रहा? Find the percentage of undecayed nuclei after 2 days. So 2 days मतलब 0.8 का स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. 2t 3t जो भी दे रखा है x by 100 whole square, x by 100 to the power of 3, x by 100 to the power of 4 कर लो, आराम से निकल जाएगा. Am I clear with this one? Am I Yes. clear with this one? Done बेटा? Yes, sir. चलो. This question. The half-life of a radioactive substance. The half-life of a radioactive substance is 1000 years. Then how much time will it take to decay by 3/4 of the initial amount? चलो ट्राई करिए. The half-life of a radioactive substance कितना है मेरे पास? 1000 years. So I can use directly the formula. N is equals to your N naught 1/2 to the power of N. Amount undecayed कितना है बेटा? Amount undecayed will be equal to N naught में से N की वैल्यू निकाल दो. This is N naught minus 3/4 times of N naught. यानी कितना हो गया? N naught by 4 undecayed. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? N naught divided by 4 is equals to your N naught 1/2 to the power of n. N naught gets cancelled. So it is 1/4 is equals to your 1/2 to the power of n. Yani this will be equal to 1/2 to the power of your 2 is equals to 1/2 to the power of your n. Yani n की वैल्यू हो गई 2. अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच? t is equals to your t half into your n. t half कितना है मेरे पास? 1000 years into 2, that will be equal to 2000 years. Am I clear? Am I clear? Sir, amount undecay वाला एक बार फिर समझाइए. The half-life of radioactive substance कितना दे रखा है उसने? 1000 years ना था बेटा. Then how much time will it take to decay 3/4 of initial amount? मेरे पास initial amount n naught है और decay कितना हो रहा है? Decayed by 3/4 decay हो चुका है. और decay हो गया तो कितना बचेगा मेरे पास? ये जो फॉर्मूला है ना, n is equals to n naught 1/2 to the power of n में n is nothing but amount which is been remained. तो n naught में से 3/4 decay हो गया तो remaining कितना है मेरे पास? Amount which is undecayed is n naught by 4. So n is equals to n naught 1/2 to the power of n. Done? Yes. Yes, sir. चलिए. इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से फास्टली. The half-life of radium. The half-life of radium is 1600 years. The fraction of a sample of radium that would remain after 6400 years is how much?
First option is 1/2. Second option is 3/4. Third option is 1/8. Fourth option is 1/16. The half-life of the radium कितना दे रखा है 1600 years. The fraction of the sample of the radium that would remain after your 6400 years will be equal to your how much? जल्दी. Time is equal to how much for me बेटा? T half into your n. कितना remaining है 6400 years. That is equals to half life कितना है 1600. तो n निकाल दीजिए. तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? A2 चले जाएगा 16 1 16 4 जा. So n की वैल्यू आ गई 4. तो n वैल्यू कितनी हो जाएगी? n is equals to n naught 1/2 to the power of n. That is equals to how much? n by n naught is equals to 1/2 to the power of n. n की वैल्यू हो गई 4 and that will be equal to 1/16. So that will be the answer. Am I clear? Then beta 1/16. Very good. चलो ये भी कर दीजिए एक बार जल्दी से. I hope you can do this one. The half-life of a radioactive substance. The half-life of a radioactive substance is 1000 years. Okay. The amount of radioactive, the amount of your radioactive substance decays to 1/16th of initial amount. 1/16th of initial amount is. Options are 2000 years. Second option is your 4000 years. Third option is your 1000 years. Fourth option is 3000 years. चलो ट्राई करिए जल्दी से. The half-life of the radioactive substance दे रखा है कितना 1000 years. यानी T half is equals to how much for me? T half is equals to 1000 years. Isn't it? The amount of radioactive substance decays to 1/16th of initial amount. यानी n is equals to n naught 1/2 to the power of n निकालना है. n की वैल्यू कितनी है बेटा? Substance decays to 1/16th of initial amount. यानी n value will be equal to 1/16 times of your n naught. That is equals to n naught 1/2 to the power of n. n naught will get cancelled. So 1/16 मतलब 1/2 to the power of 4 will be equal to 1/2 to the power of your n. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर आ गई. So n's value is 4, then t value will be equal to how much better? T is equals to t half into your n. T half is right now for me 1000 into n is nothing but 4. And this value will be equal to 4000 years. Second option. Then 4000 years. Chalo, very good. Next one. Sir, that capital N is the remaining part, no, sir? हाँ तो वही बोला ना. The half-life of a radioactive substance is 1000 years. The amount of radioactive substance decays to 1/16th of initial amount. Isn't it? Yes. So n की वैल्यू कितनी हो गई 1/16th of your n naught. ये क्वेश्चन करिए. The half-life of a radioactive nuclei is 20 hours. Question is what fraction of original activity will remain after 40 years. Options are 1/4,
1 by 8, 1 by 16, 3 by 4. The half-life of the radioactive nuclide is given for me, but at 20 hours. What fraction of original activity will remain after 40 years? And time is given for me. Small t is equals to 40 years, isn't it? And t half is given for me. How much for me? 20 hours. So n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N is equals to t divided by t half. And t की वैल्यू हो गई 40 divided by 20. So that will be equal to 21s are 22s are. That will be equal to 2, isn't it? What fraction of original activity? Activity मतलब क्या? Same formula again. A is equals to your a naught divided by 2 power of your n. जैसे n लिखते हो ना, n is equals to n naught 1 by 2 to the power of n. तो यहाँ पर activity will be a is equals to a naught into 1 by 2 to the power of your n. कोई लिखा है ना मैंने? a is equals to 1 by 2 to the power of your n. यानी that value will become for me a naught divided by 2 to the power of 4. यानी हो गया 4. That means a by a naught will be equal to 1:4. Done. Sir, Is will in not hours and years, no, sir. hours to minutes. The half-life of the radioactive nucleus is your 20 hours. What fraction of original activity will remain after 40 years? Sir, वो hours में दिए हुआ है ना, तो will not convert that into minutes, sir. ये तो half life है ना बेटा? जी sir. Is how much for me? 40 years. And time is right now for me. Half life time period is right now for me 20 hours. Done बेटा? Oh, shouldn't we convert as there are two different units years and यहाँ पर 40 years मतलब क्या बेटा? 40 years is nothing but 2 half lives only ना? Half life of radioactive is 20 hours, isn't it? यानी for 40 years it is how much for me? 2 half lives only ना? यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी डायरेक्टली? a नॉट डिवाइडेड बाय 2 पावर ऑफ n. दैट्स इट. जरूरत नहीं है बिकॉज हाफ लाइफ में लिख सकते हैं ना. 40 years is nothing but 2 half lives. Done. Hours is 2 half.
lives. And बेटा हाँ ये 40 आवर्स ही होना चाहिए. 40 years होगा तो बहुत ज्यादा हो जाए. दिस शुड बी ऑफ 40 आवर्स. यहाँ पर 20 आवर्स में दे रखा है. ये भी आवर्स में होना चाहिए वरना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएगा. Done? So next question. Two radioactive materials X1 and X2 have your decay constants like 10 lambda and lambda respect. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of X1 and X2 will be 1 by E after a time. Good question. First option is 1 by 10 lambda. Second option is 1 by 11 lambda. Third option is 11 by 10 lambda. And fourth option is 1 by 9 lambda. 1 by 9 lambda. Two radioactive materials X1 and X2. ये X1 है और X2 है. इसका decay constant है मेरे पास 10 lambda और इसका decay constant है मेरे पास lambda. If they initially have same number of nuclei, यानी इसके पास N0 है और इसके पास भी N0 है, then the ratio of number of nuclei of your X1 to your X2, यानी N1 की वैल्यू, इसकी N1 निकालना है मुझे और इसका भी N2 की वैल्यू निकालना. तो N1 की फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? N1 is equals to N0 exponential to the power of minus 10 into lambda. टाइम कितना है बेसिकली? 10 lambda, isn't it? Am I clear?
Yes, sir. n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n2 is equals to your n naught exponential to the power of minus lambda into t. This is 10 lambda into t. Done. इन दोनों का रेशियो ले लीजिए n1 divided by n2 will be equal to n naught will get cancelled. This will be exponential to the power of minus 10 lambda. ये माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा, ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, प्लस लैम्बडा इंटू टी. So that will become for me exponential to the power of minus 9 lambda into your t. और उसने बोला the number of nuclei of your x1 to x2 is 1 by e, यानी n1 by your n2. n1 by your n2 is given as of your how much for me 1 by e. So 1 by e is equals to exponential to the power of minus 9 lambda into t, यानी this value will be equal to how much for me? इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देख लीजिए. E power of minus 1 will be equal to exponential to the power of minus lambda into t, यानी 9 lambda into t is equals to 1. So t is equals to 1 by 9 lambda. Fourth option. Am I clear? This is also one important model bit. The radioactive materials x1 and x2 have the decay constants of 10 lambda and lambda respectively. If they have the same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of x1 and x2 will be 1 by e after a time. यानी problem में दे रखा है n1 by n2 is equals to 1 by e. Sure. Next question. This one is also a good question, बेटा. जरा आप लोग करने की कोशिश करिए. The activity. सर थोड़ा ऊपर करिए ना. The activity of a sample. The activity of a sample of radioactive material is A1 at a time T1. Okay, and A2 at a time T2. The bracket T2 is greater than T1. If mean life is capital T, then find A2. सेम जैसे प्रीवियस किए थे ना वैसे. एक्टिविटी कैसे लिखोगे आप? A1 में लिखोगे ना, A1 is equals to your A naught exponential to the power of minus lambda into time is T1. उसी तरह से A2 will be equal to your A naught exponential to the power of minus lambda into your T2. And we know that lambda is nothing but the reciprocal of your time, half life. तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए. A2 divided by your A1 will be equal to exponential to the power of minus lambda into T2 divided by exponential to the power of minus lambda into T1. तो ये बन जाएगा exponential to the power of your minus lambda into T2. ये ऊपर जाएगा तो minus of minus will become for me plus lambda into T1. Isn't it? यानी A2 value will be equal to how much better? A2 value will be equal to your A1 exponential to the power of lambda common हो जाएगा. So this will be equal to your T1 minus of T2 into lambda. Done. So A2 value will be equal to how much for me? A1 into exponential to the power of T1 minus T2 into your lambda. Lambda value will be equal to how much for me? Time period. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? A2 is also equal to your A1 exponential to the power of your T1 minus of T2. Lambda मतलब capital T. अगर half life में लिखा है. Sorry, mean life. Isn't it? Mean life यहाँ पर कैसे represent किया है? Capital T. Actually कैसे represent करते हैं अपन? Tau. Tau is equals to your 1 by lambda. Isn't it? So A2 is equal to A1 exponential to the power of T1 minus T2 divided by your. Done better. Clear? Sure. सर आप माइनस लैम्डा T2 और माइनस लैम्डा T1 को माइनस करो सर.
कहाँ पर बेटा? सर ए वाला देखो, a2/a1 इज एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना, प्लस लैम्डा इंटू टी1। यस सर तो a2 इज इक्वल टू a1 एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ, यहाँ पर हो गया माइनस t2 प्लस t1, लैम्डा कांस्टेंट हो गया तो उसको फ्लिप कर दिया मैंने यहाँ पर, t1 माइनस t2 इंटू लैम्डा, तो माइनस साइन चले गया, यस सर isn't it? और लैम्डा में आंसर आ गया तो ठीक, यहाँ तक है। मीन लाइफ में दे रखा है ना बेटा, मीन लाइफ इज गिवन एज टी, तो टी में होना है मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/t, तो उसको मैंने 1/t में कर दिया। यस सर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। 90% 90% of the active nuclei, 90% of your active nuclei present in a radioactive sample, present in a radioactive sample are found to remain, or found to remain undecayed, अभी लिखाया था मैंने शॉर्टकट आप लोग को, undecayed after 1 day, after 1 day, stop. The percentage of undecayed, the percentage of undecayed nuclei, the percentage of your undecayed nuclei left after 2 days, after 2 days will be how much? First option is 85%, second option is 81%, third option सेकंड is ऑप्शन सर। percent, and fourth option is 79%. कितना जल्दी हो गया देखो आंसर, सेकंड सेकंड ऑप्शन ऑप्शन। आ गया सभी को? यस सर क्या करें आप लोग? 90 90% बाय 100। 100 ना, x is equals to 90 divided by 100, यानी कितना हो गया है 0.9, isn't it? After कितना हाफ लाइफ बोल रहा है 2t, so this value will become how much? 0.9 का whole 0.9 होल square, स्क्वायर so that will be equal to 0.81, यानी that will be equal to 81%. Done? यस सर Check. इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन कहाँ है एक बार देख लीजिए बेटा, मैंने कल पेपर आप लोगों को भिजाया था। हिटलर फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया था शायद, और सेवन कौन आ गया?
एक शॉर्टकट देख लीजिए बेटा. टू फाइंड wavelength of radiation. Find wavelength of radiation from state EM to state EN. ठीक है? To find wavelength of radiation from state EM to your state EN. Wavelength का फॉर्मूला लिख लीजिए. लैम्बडा is equals to product of numbers उसका whole square divided by sum of numbers multiplied with difference of numbers into 1 by Rydberg's. ठीक है? यानी लैम्बडा कितना हो जाएगा? लैम्बडा विल बी इक्वल टू व्हाट आर द स्टेट्स बेटा? m into n. ये हो गया मेरे पास m into n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, यानी दिस विल बी योर m plus n मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस m minus n into 1 by r. तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर r. ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लेगा, कम से कम टाइम के अंदर अपन ऐसे वाले प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं. जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल दे दूं आपको. ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट मान के चलिए n is equals to 4 to n is equals to 2 करना. तो लैम्बडा कितना हो गया बेटा? लैम्बडा is equals to 4 into 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 plus 2 into 4 minus 2 multiplied by 1 by r, and that will be equal to 4 to the 16 whole square divided by 4 to the 8, 8 8 is 64 divided by 6 plus 2, 6 minus 2, so it will become 16 divided by r. आ गया सर? हाँ बेटा. 1 by लैम्बडा की फॉर्मूले की जगह ये लेना सर. हाँ 1 by लैम्बडा के लिए, यानी लैम्बडा हो गया मेरे पास 16 by r, यानी लैम्बडा का वैल्यू 1 by लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? r by 16. वेव नंबर आया था ना सर. हाँ. Done? सर सर एक्साइटेशन के लिए भी वैलिड है सर ये फॉर्मूला? एक्साइटेशन के लिए देखो थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन इसको और एक फॉर्मूला बना लेते हैं. हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो n प्लस 1th स्टेट है, n प्लस 1th स्टेट से लेके nth स्टेट को जा रहा है, isn't it? That is डिफरेंस, अगर डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन जो भी अपन ले रहे हैं, difference between the transition state is 1, then you can calculate the wavelength by the formula lambda is equals to product of numbers का स्क्वायर कर लीजिए. आपको मैं एक प्रॉब्लम करवा के बताता हूँ, you get an idea, divided by sum of your numbers कर लीजिए बस into 1 by r. Done? n plus 1th state से लेके nth state तक जा रहे हो, so difference between the transition state is only for me 1. तो उस टाइम पे लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? प्रोडक्ट ऑफ नंबर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द नंबर इनटू 1 बाय r. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करो आप लोग इसको. मान के चलो द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम first jumps from the third excited state to the second excited state
and subsequently to the first excited state. To the first excited state. The question is the ratio of the respective wavelengths. The ratio of their respective wavelengths, lambda 1 by lambda 2 of the photons emitted in this process. Emitted in this process is, first option is 20 by 7. Second option is 27 divided by 5, 7 by 5, and 9 by 7. Chalo try karo. The electron in an hydrogen atom first jumps from third excited state to the second excited state, isn't it? And subsequently to the first excited state, isn't it? यानी n plus 1th state to the nth state, और difference between the transition कितना है बेटा? 1 ही है ना? Yes, sir. So lambda is equal directly I can take what? Product of numbers का whole square कर लीजिए, divided by sum of numbers, divided by sum of your numbers into 1 by r, isn't it? यानी n1 is equals to 4, क्योंकि this one is what? Third excited state ना? Third excited state मतलब क्या? n1 is equals to 4 and n2 is equals to कितना हो जाएगा? 3, because it 3. is your second excited state, isn't it? Yes, sir. यानी lambda 1 will be equal to how much better? Lambda 1 is equals to 4 into 3 का whole square divided by 4 plus 3 multiplied by 1 by r. So this value will become how much better? 4 into 3 का whole square divided by 4 plus 3. 12 of whole square यानी 144. ये हो गया 144 divided by 7 r. हाँ. ठीक है? Then lambda 2 will be equal to how much better? Lambda 2 is equals to 3 into 2 का whole square divided by 3 plus 2 multiplied with 1 by r. यानी 36 by 5r. 6 divided by 5r. ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछना ना डायरेक्टली. तो lambda 1 divided by lambda 2 यानी 144 divided by 7r into this is 5r divided by 36. This one will get cancelled. So this value will be equal to how much? देख लीजिए कितना आ रहा है. 144 into 5 divided by 7 into 36. सेवन है 36 मतलब 36 into 2 20 144 into 5 कितना आ रहा है? 20 by 7. 20 by 7. फर्स्ट ऑप्शन आ गया. सर हाँ बेटा. सर ये जब मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे के एनर्जी लेवल से ऊपर गया जब नहीं लगता है सर ये फॉर्मूला? नहीं लगता क्योंकि वो डिफरेंस वही लिखा है ना मैंने बेसिकली. ये उतना लंबा तो देगा नहीं अपने को, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा. अगर एक का ही डिफरेंस है तो अपन नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैंने पर क्लियरली लिखा n plus 1 स्टेट से लेके nth स्टेट तक हो और डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन कभी भी बने तो डायरेक्टली लगा तो आपको कम से कम टाइम में निकल जाएगा आपका आंसर, और आसान भी है. और ये वाला देखिए क्या था मेरे पास, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम स्टेट m टू स्टेट n. तो लैम्डा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इनटू 1 बाय r कर दो. सर इसमें डिफरेंस कुछ भी रह सकता ना? हाँ कुछ भी हो सकता है. देखिए एक बार मैं इसका भी प्रॉब्लम देता हूँ, देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए अभी आप. टेकिंग द वेवलेंथ of first Balmer's line in hydrogen spectrum. N is equals to 3 to N is equals to 2 as 660 nanometer, comma, the wavelength of
the second Balmer line. Yani n is equals to 4 to n is equals to 2 will be how much? Options given for me are 889.2 nanometers, 488.9 nanometers, 642.7 nanometers, and 788.9 nanometers. चलिए taking the wavelength of the first Balmer line in the hydrogen, यानी lambda 1 की वैल्यू देख लीजिए. lambda 1 is equals to प्रोडक्ट नंबर उन दोनों का 3 into 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, यानी पहले हो गया सम 3 plus 1 और उसके बाद डिफरेंस 3 minus 2 into 1 by r, 36/5. 36 divided by 5r. इसी तरह से lambda 2 is equals to 4 into 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 plus 2 दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाय 4 minus 2 into 1 by r. ये कितना हो जाएगा? Thirty-two by 6, sir. 4 into 2 मतलब क्या? 4 to the 8, 8 square, 8 is 64 divided by 4 plus 2 is nothing but of your 6 into 2. Well, यानी कितना हो जाएगा? 16 by 3 आया? मैं क्लियर? So lambda 2 divided by lambda 1 will be equal to how much? Lambda 2 is 16 by 3r into, this will become for me 5r divided by 36. 3r here चले गया, so it is 16 into 5 divided by 3 into 36. 5 6 are 30, 0, 5 1 5 6 and 8, 80. 80 divided by 3 into 36, 16, 108. Then lambda 2 divided by lambda 1 is 80 divided by 108. And lambda 2 निकालना है. Lambda 2 is equals to 80 times of lambda 1 divided by 108. And this is your 80 into lambda 1 कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 660 nanometers. This is 660 nanometers. क्योंकि ऑप्शंस भी नैनोमीटर्स में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. Divided by 108. इसको कैलकुलेट कर लो, that will give me the answer. Done. Yes, sir. जनरल मेथड से करोगे तो लंबा चौड़ा निकलता बेटा. सर सेकंड ऑप्शन. Sir, second option. आ गया? Yes, sir. और एक प्रॉब्लम करोगे ऐसा? Yes, sir. सर एक्साइटेड अगर क्वेश्चन में रहा तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना ना सर. हाँ, एक्साइटेड बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना. तो क्वेश्चन में क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 ही है ना. एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 2 टू अगेन 1. जब डिफरेंस बन रहा है तो ये फॉर्मूला वैलिड है सर. हाँ डिफरेंस बन रहा है तो फॉर्मूला वैलिड है. हाँ, डिफरेंस बन रहा है तो वैलिड है. नहीं बोले तो आपको भी जनरल फॉर्मूला लगा करना पड़ता. 1 by lambda is equals to r into your 1 by your n1 square minus of your 1 by n2 square का फॉर्मूला लगा लेते कर लेते बेटा. एक प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करोगे इसी मेथड से. अब दो मेथड से भी करो, जो मेथड आपको टाइम सेव कर रहा है वो मेथड से आप लोग करने की कोशिश करो. या मैं आपको दो मेथड भी एक बार करवा के बताऊं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि विच इज मोर लेंथी एंड विच इज मोर इजियर फॉर यू. isn't it? तो देख लीजिए क्वेश्चन ट्राई कर दिए. इन्हीं हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम when an electron jumps from m shell to L shell, the wavelength of emitted radiations
The wavelength of your emitted radiation is lambda. Okay. If an electron jumps n shell to L shell, isn't it? The wavelength of emitted radiation. The wavelength of your emitted radiation is. First option is 27 by 20 lambda, 16 by 25 lambda, 25 by 16 lambda, and 20 by 27 lambda. जनरल मेथड से करो पहले मैं मान के चलो मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम, आप लोग कैसा करोगे सर? अगर ये m से लेके L शेल तक जा रहा है तो 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू r इंटू ये हो जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, यानी दैट विल बी इक्वल टू r इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9. ये हो गया मेरे पास r इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा 36 5 यानी 5 बाई 36, यानी लैम्डा 1 की वैल्यू हो जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 5r. Then an electron is jumping from your n shell to your L shell. 1 by lambda 2 is equals to r into this will be 1 by 2 square minus 1 by L matlab 4. This is 4 square. And that will be equal to your r into 1 by 2 square is 4 minus 1 by 16. So that value will be equal to r into 1 by 4 minus 1 by 16. LCM will be 16. 16 minus 4 3. So 3 by 16. यानी lambda 2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 16 divided by 3 into your r. Isn't? अब इन दोनों का रेशियो lambda 2 divided by lambda 1 is equals to 20 by 27. Isn't it? Totally with the answer right now for this one. Lambda 2 is equals to 20 by 27 times of lambda 1. This is the answer. Am I clear? भाई अगर ट्रिक के द्वारा चले जाए तो lambda 1 की वैल्यू कितनी होगी? Lambda 1 is equals to 3 into 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, इसका डिफरेंस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई r. 3 2 is 6, 6 का होल स्क्वायर तो ये सेम आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5r. फ्रॉम विच शेल? फ्रॉम m शेल to your L शेल. उसी तरह से lambda 2 is equals to 4 into 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 प्लस 2 into 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 बाई r. तो कितना बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई योर 3r. कौन से शेल से? n शेल से लेके L शेल तक. तो अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, lambda 1 डिवाइडेड बाई lambda 2 और lambda 2 डिवाइडेड बाई lambda 1. तो 20 by 27. So lambda 2 value will be equal to 20 by 27 times of lambda 1. That will be the answer. Clear? 20 Yes, by sir. 27 times of lambda 1 is lambda. जो आपको समझ में आए उस हिसाब से कर लीजिए आप आराम से. सर हाँ बेटा. इसमें एलसीएम लेना पड़ा उतना ही लॉन्ग हो रहा. हाँ एलसीएम हो रहा ना, अगर आपका एलसीएम स्ट्रांग है तो आसान है. मैं यहाँ पर थोड़ा आपका कैलकुलेशन टाइम सेव कर रहा हूँ. यस सर. सर इसमें अगर आप लैम्डा 2 की वैल्यू पूछा तो दोनों को इक्वेट कर मतलब दोनों को हाँ, डिवाइड कर देना ना. हाँ डन. क्लियर है? यस सर. सेमीकंडक्टर्स में क्या बोलते हो, फॉरवर्ड बैस रिवर्स बैस वगैरह कुछ हटता है कि करना है मुझे अभी ऊपर? मैं सोच रहा था इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट विथ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी वंस. लॉजिक गेट्स तो एक बार कर चुके हैं ना बेसिकली. करंट इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा पोटेंशियोमीटर वेयर रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम्स को कर ले. उसका वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स एक थोड़ा सा फास्टली रिवीजन कर ले जो एक्सपेक्टेड होते हैं. Sir, हाँ बेटा. sir, like I'm getting doubt in decay and undecay and present and remaining. So can you just explain me with one example, sir? यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला अपन ले रहे हैं
n is equals to यहाँ पर n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ योर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहाँ पर हेडिंग जो क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी। यानी मेरे पास एक सैंपल है, इसका नहीं डिसइंटीग्रेट होने से पहले उसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, n नॉट। थोड़ी देर के बाद यानी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम दिस सैंपल हैज बिकम फॉर मी n। मतलब क्या, n इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग, कितना रिमेन हुआ है, यानी n नॉट मतलब क्या, मेरे पास 100, मैंने थोड़े टाइम के बाद एक 40 रुपए खर्च कर दिए, यानी रिमेनिंग कितना हुआ, अगर मैंने 40 रुपीज स्पेंड कर दिया तो 60. रिमेनिंग मतलब कितना हो गया, 100 माइनस 40 यानी 60। इसका मतलब ये 60 जो है ना, दिस इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर द टाइम टी, यानी स्पेंड करने के बाद जो बचा आपके पास उसको हम लोग n से लिख रहे हैं बस। जी समझ सर। लिया? यस सर। और टाइम कितना लगेगा, t is equals to 2.303 log of your 10 n naught by your n। I hope you got it one। मीन लाइफ Yes. का फॉर्मूला, हाफ लाइफ वगैरह सब है, कंडीशन है। Yes. थोड़ा बहुत अब यहाँ से आप फर्स्ट ईयर के ग्रेविटेशन वगैरह चैप्टर्स के निकाल के रिवीजन करना शुरू कर लीजिए बेटा। ग्रेविटेशन कर लीजिए एक बार, एसएचएम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए, isn't it? फिर से एक बार हीट और थर्मोडायनेमिक्स पे रेगुलरली पढ़ता कर लीजिए। और जो मैंने आप लोगों के 10 ग्रैंड टेस्ट पेपर्स आपके लिए भेजा था विद सॉल्यूशंस भेजा है मैंने, उसमें से पहले एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस कर लीजिए जो अपन टॉपिक्स ने खत्म किया ना, वो ईद के टाइमिंग में जब भी आपको टाइम मिल रहा, ईद अभी आती रहती जाती रहती आप लोग के लिए, तो ऐसा नहीं कि टोटली के टाइम स्पेंड कर दें, जितना हो सका उतना आप सेलिब्रेट कर लीजिए। उसके बाद एक 2 दिन ग्रैंड टेस्ट आप लोग ये 3-4 दिन के अंदर करने की कोशिश कर लीजिए। And tomorrow is Friday. Tomorrow I may not be taking the class because I'm out of station. Friday, Saturday and Monday most probably अगर हुआ तो Monday evening करेंगे, नहीं बोले तो Tuesday evening से start करेंगे। I'll let you know in the WhatsApp group what will be the next class timing basically। कल परसों तो वैसे भी नहीं रहेगी, उस टाइमिंग में आप लोग प्लीज जरा आप लोग ग्रैंड टेस्ट खत्म कर लीजिए। जो मैंने आपको 10 ग्रैंड टेस्ट या 5 ग्रैंड टेस्ट मैडम ने भेजा है, वो 5 ग्रैंड टेस्ट पेपर्स में से एक्सक्लूसिवली एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस कर लीजिए, वो 80 मार्क्स का टारगेट खत्म कर लीजिए। और 1-2 चैप्टर्स आपके पास जो आते हैं ना उसमें से आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिए। सर हाँ सर ये जो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर भेजे उसकी की भेजिए ना, क्या बोले बेटा? जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर भेजे सर आप, हाँ हाँ उसका की भेजिए ना। हाँ भेज देता हूँ, विद सॉल्यूशंस भेज देता हूँ आप लोग को, टेंशन नहीं होगा। यस सर। हाँ आप लोग कर लीजिए, आप लोग कर सकते हैं बोल के बोले तो ये वाले, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड लाइन वाइज है, तो आप लोग को मैं एक बार सॉल्यूशन भी निकाल दे के आप लोग को भेज देता हूँ। उसको एक कब का पेपर है, 15 का रिसेंटली है, निकाल दे के भेज देता हूँ। पूरे नॉर्थ इंडिया के पेपर से बेटा, बहुत एडिटिंग के लिए बहुत टाइम लग जा रहा है, इधर से डालो उधर से डालो, उधर निकालो उधर डालो, और पूरा पेपर मुझे डालना है तो लैपटॉप भर जा रहा हूँ, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री डाले तो एक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल ट्राई टू सी, आई विल सेंड यू विद द की, यू कैन ट्राई टू डू इट एट योर्स, ठीक है? यस सर। ओके सर, Yes. टेक केयर बेटा, बाय ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय।